यूट्यूब चैनल एडवांस एक्सेल ट्रिक्स में। आज के वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दो बेहतरीन फार्मूले, इंडेक्स एंड मैच। एंड ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी सिंपल फार्मूला, बट द ट्रिकी वन इज लाइक टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे हम लोग और दैट विल बी द मैजिकल। देखिए, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स करता क्या है? इट रिटर्न्स द वैल्यू एट स्पेसिफिक पोजीशन इन अ गिवन रेंज। से फॉर एग्जांपल ये एक रेंज है, ये हमने एक एरे ले लिया, सो इट रिटर्न्स द वैल्यू। कौन सी वैल्यू करता है? हमें वैल्यू को स्पेसिफिक पोजीशन में, किसी स्पेसिफिक पोजीशन में कौन सी वैल्यू है उसको हमें रिटर्न करता है। अभी हम फॉर्मूले को एग्जांपल के साथ देखेंगे। मैचेस क्या करता है? सर्चेस फॉर द स्पेसिफाइड आइटम। से फॉर एग्जांपल अगर ए है, उसको सर्च करेगा एंड रिटर्न्स इट्स पोजीशन। उसके पोजीशन को रिटर्न करेगा कि कौन सा ये पोजीशन है। और उसका कॉम्बिनेशन भी हम लोग देखेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल इंडेक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हम इंडेक्स का यूज करके देखते हैं। इंडेक्स, नाउ इट इज आस्किंग फॉर द एरे, दिस इज गोइंग टू बी आवर एरे। अभी हमें पता करना है कि इसमें, क्योंकि ये देखिए बहुत छोटा सा डेटा सेट लिया है, लार्ज डेटा पे दिस विल गिव लुक्स लाइक अ मैजिक, but here you can easily guess that what is going to happen, and that is the reason I wanted you to have your concept clear कि हम करने क्या जा रहे हैं। इसी के लिए बहुत छोटा डेटा सेट लिया है हमने। एरे सेलेक्ट कर लिया। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द रो नंबर। टेल मी, हमें कौन से रो नंबर का या कॉलम नंबर का डेटा पता करना है? से फॉर एग्जांपल के, मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, आप जी का भी कर सकते हो, बट गो फॉर द के बिकॉज मैंने यहाँ के लिख दिया है। तो के लिए फॉर दिस डेटा let's find out the row number. So row number is 1 2 3 कॉमा 3। आप कहोगे ये कौन सी बात हुई, ये तो दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये एक बेस फॉर्मूला है और इस दोनों इंडेक्स और मैच का जब कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे तो यू कैन सी हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट। ओके, अगेन इट इज आस्किंग फॉर द कॉलम नंबर। के इज कॉलम नंबर 1 2 3, सो अगेन 3 ब्रैकेट क्लोज। You see, at third row and third column K is there. से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे इसको कॉलम नंबर 4 कर दूं। I'll have to write it again. All the formula is equal to index, open parenthesis, array, this array I have selected, comma, row number is, say for example H के लिए चलते हैं, row number is 1 2 3 4, comma, column number is 1 2, so 2 bracket close. So fourth row पे and second column पे what data what we were having is H, what exactly we are having at this time. So this is about the index. आप इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ सी, मैच का क्या यूज है? मैच क्या करता है? सर्च करता है स्पेसिफाइड आइटम को पूरी रेंज में। अब से फॉर एग्जांपल मैं ए को सर्च करूंगा तो सर्च करेगा और उसकी पोजीशन बताएगा हमें। सो लेट्स गो फॉर इट, इज इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू, lookup value is this, lookup value is A, we are going to search for the A. Always remember, whenever you put any word or letter, always keep it in semicolon. Okay, now lookup array, you see lookup array I have selected, comma, match type, we need less than exact match or greater than, currently we will be going for the exact match because हमारा exact match हमें यहाँ पे मिल रहा है, available है। Close it. Now position of A is 1 here in this array what we have selected. Now see quickly for position B or G. Let's go for position B is equal to match. It is asking for the lookup value. Say for example we are searching for B. Okay, comma, lookup array is this, bracket close, wait, we need exact match, comma, then bracket close. B is at second position.
So see, my dear friends, where matches are searching for the specified item, be it A, be it B, or be it G, there index returns the value at specific position. उस स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है ना, से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे एफ है, तो ये हमें स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड करता है. दिस इज द थिंग लाइक आई वांटेड यू टू हैव द बेसिक क्लियर. नाउ सी, और सिर्फ ऐसे ही एरे की बात नहीं करते, हमारे पास में सिर्फ से फॉर एग्जांपल डेटा के लिए सिर्फ हमारे पास रो में डेटा है या सिर्फ कॉलम में डेटा है, देन ऑल्सो वी कैन गो फॉर इट एंड इट विल वर्क. से फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू मैच, open parenthesis, lookup value is say Vivek, bracket close, sorry, semicolon close. Now lookup array, it is asking for the lookup array. Lookup array selected. What we need exact match, so go for the 0 and close the bracket. See, Vivek is at first rank, so it will work either in array or the data set if you are having either in row or column. So now we are going to see the combination of these two. आपको पता चल गया एक आपके कौन से रो और कौन से कॉलम में वैल्यू है वो प्रोवाइड करेगा, और दूसरा उस वैल्यू को सर्च करके उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा. ये रहा इंडेक्स एंड मैच. नाउ सी, वी आर गोइंग टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, यूसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर दीज टू. हियर वी आर हैविंग अ डेटा, एक डेटा है हमारे पास में स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, इस साइजेस हैं, इस साइज के स्वेटर जैकेट एंड पैंट, दीज थ्री प्रोडक्ट्स आर देयर, और किसका क्या प्राइस है. और हमने से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग अलग ले रखे हैं. अभी देखिए हमने स्वेटर सेलेक्ट किया, स्वेटर स्मॉल, स्वेटर एंड स्मॉल इज $10, जैकेट स्मॉल इज 30. इस तरह से हमने ऑलरेडी इंडेक्स मैच का एक फॉर्मूला लगा रखा है. अभी आप देखो पैंट सेलेक्ट करने पे, so this value will keep on changing, and same if we'll change the size, so this will keep on changing. Size medium is 30, size large for the pant is 35. You see, this is very dynamic formula and this is changing as per our requirement. तो अगर my dear friends हमें इंडेक्स मैच लगा के इसका वैल्यू निकालना है पैंट एंड लार्ज या वॉट एवर द डेटा विल सिलेक्ट हियर. So I request you all to try VLOOKUP first, because you know VLOOKUP is very old, you can say oldest formula in all the lookups. Now see, by using that can we get this? If we can, so what is the use of index match? So let's try for the VLOOKUP. Open parenthesis, lookup value will be this, okay, comma, table array will be this, comma, column index number. Wait, lookup value is this. Now table array, if it is asking for the table array, that will be this, column index number, and we need large. Just bear with me. Yes, we have selected the array. Okay, we have taken for the VLOOKUP. Open parenthesis, it is asking for the lookup value. It will be pant, comma, table array. Table array is this, and we need size large. So go for the large, comma 4, comma 0. Exact match. See, we have got this because we have selected pant and large size, so we have got this price by using the VLOOKUP. I haven't explained VLOOKUP because this video is on index match. Now see what happened. We have selected large. What will happen if we'll go for the medium? See, is it working? No. Suppose if we'll go for the small, is it working? No. Or suppose if we'll change the product, say for example sweater. So see, for products it is working. For products it is working. The reason behind that, we have taken the formula in which we have selected our this product and entire array. So
For product, this is working, but for the sizes, this is not working because VLOOKUP works in unidirection, only one thing at a time. Now, this is the advantage of putting index and match together, so you can get the actual desired result. So firstly, we have tried for the lookup value, VLOOKUP. So that was not working here. Now try for the index match, the combination of this, and I want you all to focus only for 1 minute. Then this index match formula will be yours. I want you all to learn this and be master in this because this is very advanced formula. Is equal to index, start with the index, open parenthesis. It is asking for the array. Okay. So select the entire array. See, here one thing I want to tell you, that from where to where, what you have selected A2 to D5, and you will have to start it from A2 again. Wait, index, then it has asked for the array we have selected. Now, comma. It is asking for the row number. Don't go there. Now put the match formula right here. Open parenthesis. Now, it is asking for the lookup value. What is our lookup value? This, pant. Okay, comma. Lookup array. Now see, in case of match, lookup array, pant we have selected, and we'll be selecting from here itself, from where we have selected just before, from the same point. This is our array, comma, match type. What we need exact match, so we'll be going for 0 at this time, and bracket close, comma. Another match, one match we have done with the pant, this product, and another match with the size that we are going to do. So another match formula, open parenthesis. Now it is asking for the lookup value, go for this lookup value, comma. It is asking to lookup array. Okay, see, we have selected this. Now we'll select this. Always remember, starting point will be the same to give you the accurate result, otherwise you will get error, comma. What we need is exact match, so go for 0, close the bracket for one match formula, close another. I'm closing it 2 times because we have used the match formula twice. And once I'll put the enter, you'll see the result in front of you. So let's see this. 25. Pant and small. This is pant and this is small. $25. For your convenience, the data I have used, I have shown it here also. So you can see this, you can use this. Now what will happen if I'll change this from pant to sweater? Sweater small is 10, you can see. From jacket and small 30, jacket small 30. Now let's change the size. Jacket and medium 35, yes, it's there. Then jacket and large 40, it's there. So this is the index match formula, my dear friends. I want you all to practice this. Practice from the beginning. Understand the index, understand the match. So thank you so much for watching this. If you love this video, so definitely please like this. If you are new onto the channel, so kindly subscribe so you can get the notification for all the new videos or other informations, other sorts. Thank you so much. Be productive and be awesome.